बढ़ते हैं और अब 5 स्टार बिजनेस के मैनेजमेंट से हम बात करने जा रहे हैं। कंपनी MSME लोन बास्केट, लार्जर MSME लोन बास्केट को स्मॉल बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करती है। अगर स्टॉक ट्रैकर देखें, पिछले 1 महीने में स्टॉक मूवमेंट में नेगेटिव रिएक्शन जरूर दिखे हैं, लेकिन इसकी लिस्टिंग जो कि नवंबर 2022 को हुई थी, तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 11% तक के रिटर्न्स, यानी कि कह सकते हैं कि 4 महीनों में कंपनी ने 11% के रिटर्न्स लिस्टिंग के बाद दिखाए हैं। आइए कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बिजनेस और ग्रोथ को लेकर आगे कंपनी का ग्रोथ आउटलुक क्या है, आने वाले क्वार्टर्स के लिए लेंडिंग रेट और कंपटीशन पर वो क्या कुछ रणनीति बनाकर चल रहे हैं। कंपनी के मैनेजमेंट CEO रंगराजन कृष्णन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर कृष्णन, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए शुक्रिया। ग्रोथ के लिहाज से अगर आप देखें तो सिचुएशन इस वक्त चैलेंजिंग कम नजर आ रही है, पर्टिकुलरली आपके कारोबार के लिए, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट और रिस्क सिनेरियोज कैसे दिख रहे हैं, किस तरह की गाइडेंस आप देख रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स के लिए, कौन से सिचुएशन, कौन से ग्रोथ गाइडेंस के लेवल्स हैं जिस पर आप कंफर्टेबल हैं? धन्यवाद मैडम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बट लेकिन हिंदी में बात करेंगे, कुछ गलती है तो माफ कर दीजिए। मिस्टर कृष्णन, प्लीज फील फ्री, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करें, एंड इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you. So it's been almost 2 years since the COVID has been over. So last 8 quarters have been fairly challenging, but the COVID clouds are out now. So it's really good to see we are booming back both in collections and in business. If you were to look at 5 Star specifically, the last 12 months, which is almost the entire financial year, the average collection efficiency has been like almost close to 100%. And the growth is back. We have grown at roughly about 30% year-on-year growth for the last about 12 months. So both from a business perspective and from a collections perspective, things are really settling well in 5 Star. And we hope the momentum to continue on the way forward. मिस्टर रंगराजन, आपकी हिंदी आई थिंक इतनी बुरी भी नहीं होगी, हमारे व्यूअर्स समझ जाएंगे आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि व्यूअर्स जो इन्वेस्टर्स भी हैं, स्टेक होल्डर्स भी हैं, और वो पैसे की भाषा और ग्रोथ की भाषा आई एम श्योर बहुत अच्छी समझते होंगे। आपकी यील्ड्स काफ़ी हाई हैं और रिलेटिवली लो क्रेडिट कॉस्ट पे है। थोड़ा सा आप हमें समझाएं कि किस तरह से आप पूरे कॉम्पिटिशन इन्वायरमेंट को भी देखते हैं। So हमारा कस्टमर सेगमेंट आप देखेंगे तो मैडम हम कस्टमर सेगमेंट को थ्री कैटेगरीज से डिवाइड कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ आवर कस्टमर्स आर सिंगल शॉप ओनर्स, so these are people who provide some kind of a service, whether it could be a kirana shop, a hardware shop, a pharmacy, a saloon, an eatery, any service that is provided to a common man. These are our classic customers. That forms about 60% of our customer base. About 25% of our customers are people who are self-employed, which is plumbers, masons, painters, electricians. And the last 15% of our customers are people who are salaried, but they are largely cash salaried and working in the informal segments. So across these 3 segments, today, majority of the people don't have access to formal financing at all. They end up lending, taking borrowing from mostly informal segment and loan sharks or money lenders. So our core focus at this point of time is to move people from informal lending to formal lending. So when they come to a company like 5 Star, which has a track record of close to 40 years and it is governed by RBI, so there is a lot of trust element that we are able to get from these people in each of the markets that we go, and that's the shift that we are seeing. So if you look at it from this perspective, we don't face much competition from organized lenders, because our primary focus in business is to move people from money lenders into formal finance, like a 5 Star way. Majority of our customers have probably taken a loan of this size and this tenure for the first time in their life. So competition itna zyada nahi hai madam. It is a very less crowded market. Execution में difficulty पड़ती है, but लेकिन competition की बात इतना ज़्यादा नहीं है। मिस्टर रंगराजन, एक बहुत ही छोटा सा सवाल है मेरा। ज्योग्राफिकली अभी आपकी प्रेजेंस कितनी है? आप साउदर्न इंडिया में है या फिर आपका पैन इंडिया प्रेजेंस है अभी? तो हम चेन्नई से, हेडक्वार्टर चेन्नई में है। हमारा कंपनी तमिलनाडु से शुरू हुआ, तो अभी आप देखेंगे तो तमिलनाडु की कंट्रीब्यूशन सिर्फ अबाउट 37% है। हमारा सिग्निफिकेंट प्रेजेंस साउथ इंडिया में है। तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, ये 3 स्टेट मिलके लगभग ऑलमोस्ट 85-86% की पोर्टफोलियो हमारा ये 3 स्टेट्स पे है। कर्नाटका में थोड़ा सा प्रेजेंस है, अबाउट 7%।
The balance 7-8% is from Central India. Central India में हमारा 4 states में हमारा presence है. Main presence in मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के अलावा हमारा branches महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और यूपी में भी है. But overall, South split is 93% and non-South is about 7% today. मिस्टर कृष्णन, कंपटीशन के लिहाज से इस वक्त आपके कारोबार के लिए स्थिति कैसी नजर आ रही है? आरंट यू फेसिंग एनी कंपटीशन, और ऐसा क्या अलग है, ऐसा क्या मॉडल यूनिक है आपके बिजनेस का जो कि आपके पेयर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अलग और साथ ही बाहर अलग तरीके से निकल कर आता है? हाउ आर यू बीटिंग द कंपटीशन? स्ट्रेंथ क्या है आपकी? So हमारा strength है मैडम, हम we are doing this business for the last about 20 years. This specific business, Five Star, has been in existence since 1984. But we have been focusing on small business loans in this segment almost for the last 20 years. We have underwritten more than 500,000 customers during this period. So we have a lot of experience in this segment. 100% of the loans are collateralized, so we don't take too much of a risk. While it's important to bring people into financial inclusion, but you also don't want to end up taking a lot of risk on your segment. So, we balance out the risk along with very good assessment of cash flow and character. So the unique position that we enjoy in the market is that if you look at sub 1 lakh loans, 1 lakh rupee ticket size loans, there is a lot of competition today. There is microfinance, there is fintech. Every bank wants to lend. There are personal loan companies which wants to extend up to 1 lakh loans for a short tenure. Similarly, if you look at above 10 lakh ticket size segment, again there is a lot of competition. Every large NBFC, every large bank wants to make sure that its presence is felt in more than 10 lakh ticket size segment. But if you look at things in between, let's say the 1 to 10 lakh, or more specifically the 3 to 6 lakh kind of a segment, not too much of competition is there, because 3 to 6 lakhs, it takes that much harder for you to source the file, make sure that you are underwriting the files well, and you have to put a lot of collection efforts in making sure that things are coming back on time. So this is the segment that we specialize in. There are a handful of companies in India which are focusing on this segment at this point of time. And even amongst them, the significant experience that we have over multiple decades and across various asset cycles gives us the confidence that we'll be a pioneer and a leader in this segment. राइट मिस्टर रंगराजन, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपनी सारे सवालों के जवाब देने के लिए. आई थिंक आपकी हिंदी उतनी बुरी भी नहीं थी. वी वुड लव टू हियर अगेन फ्रॉम यू. जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी और विश यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स. Thank you very much. चलिए बढ़ते